Welcome, sir. Thank you for coming. The artist began his mural painting studies at the Guruvayur Temple, Kerala, then continued his education at the BHU. He is a full-time research fellow and also presently he is a professor at the Faculty of Visual Arts. कॉन्फ्लुएंस के बारे में मुझे लग रहा है मुझे बताना चाहिए। सर के जब ये चित्र देखे मदन लाल सर के यहाँ इसी गैलरी में लगे थे और भी कई जगह उनका काम देखा और सर हमेशा हम लोग को शेयर करते रहते हैं सुरेश सर। तो एक मन में इन चित्रों के साथ, क्योंकि आप लोग अगर स्टूडेंट्स देखेंगे तो इसमें बहुत सारे डांसिंग मूवमेंट्स हैं, तो एक मन में ये भावना उठी कि चलो कुछ इन चित्रों के साथ मिलके किया जाए। तो ये लगा कि कुछ काम करें। तो एक थाईलैंड की राजभाट यूनिवर्सिटी के लिए एक इंटरनेशनल सेमिनार में पेपर लिखना था। उसमें गर्मी की छुट्टियां थी, जून था, आप लोग भी सब नहीं थे, हम लोग के पास थोड़ा सा काम कम था। तो सर से रिक्वेस्ट करी कि सर क्या हम लोग इस तरह से मिलके कुछ काम कर सकते हैं। और आप विश्वास मानिए इतने बड़े आर्टिस्ट हैं सर, लेकिन उन्होंने सहज रूप से अगले दिन वो आ गए और उन्होंने लगभग 5 दिन की मेहनत के बाद ये सारे चित्र लगाए यहाँ इस वॉल पर। तो पहले तो एक आंखों के सवाल रहते थे सब यहाँ पर आ करके उन्होंने ये चित्र लगाए। फिर हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट के तहत काम किया, वीडियो बनाए और इसके साथ उसी दौरान मेरे मन में ये विचार आया कि जब तुम लोग आओगे नए एकेडमिक सेशन में, पिछले 2 साल कोरोना के वैसे ही जो लास्ट ईयर बेकार गए हैं एक तरह से, तो तुम लोग के लिए कुछ गिफ्ट होना चाहिए। और ये विचार मेरे मन में था कि आते ही हमारे बच्चों को एक ऐसे नेचर सीरीज से रिजुवनेट किया जाए कि आपको आते ही सारी चीजें फिर से आप साल भर के लिए जुट जाओ कि नहीं हम और अच्छा काम करें, आगे बढ़ें। और दूसरी बात ये थी कि जब पीएचडी स्कॉलर्स हम लोगों के पास आते हैं तो वो बिल्कुल विचार शून्य आते हैं, वो एमए करके आते हैं, जेआरएफ कर लेते हैं, लेकिन उनके पास कोई भी रास्ता नहीं होता है, बिल्कुल दिशाहीन से होता है कि हम क्या काम करें, हम कैसे करें, क्या करें। तो आज यहाँ पर बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर्स तो है ही हैं, बीए के स्टूडेंट्स हैं। आपके लिए ये जो 7 दिन होंगे ये बहुत महत्वपूर्ण होंगे। आप अपने फ्रेंड्स को भी बोल देना जो आज नहीं आए जरूर आए, क्योंकि ये जितने भी विद्वान अलग अलग क्षेत्र से आपके साथ बात करेंगे इंटरप्रिटेशन की कला के बारे में, ये आपको आगे जरूर मुझे उम्मीद है कि एक दिशा देने का काम करेगी कि हम और क्या सोचें, क्या और कर सकते हैं। सिर्फ कथक के या भरतनाट्यम की चीजों को या किताबों को या किसी एक चीज को, आवत को, टुकड़े को, तिहाई को, परन को लेकर ना रिसर्च करें। हम किसी एक किताब को लेकर ना रिसर्च करें कि उसमें बस एक नृत्य अध्याय पकड़ लें और बस उसी में करते रहें और आखिरी में जमा करके निकल जाए। ऐसा उद्देश्य ना हो, बल्कि जो शोध कार्य हो उनका ये उद्देश्य हो जो कुछ नई बात के सामने रखे, पुरानी चीजों को लेते हुए यह दुनिया के साथ आपको जोड़ने के लिए एक मदद करे कि हम क्या और आगे कहाँ कैसे। मान लो बिल्कुल तुम यूएस जाते हो, यूके जाते हो, वहां जाके क्या करोगे? सिर्फ वही तो चीजें नहीं करोगे जो कर रहे हो। उस देश और उन लोगों के साथ भी आप जब जुड़ोगे तो क्या करोगे? एक सोच देने के ये मुझे लगता है ये कॉन्फ्लुएंस जिसको कहे तो संगम है ये सब चीजों का, विचारों का, कला का और सौंदर्य का। आज हमारे मध्य हमारे सरकारी प्रमुख उपस्थित है, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आभार देती हूँ। सर ने बहुत मुझे सहयोग किया ये पूरे कार्य को आयोजित करने के लिए, मैं आभार व्यक्त करती हूँ। और साथ में आज हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट और उपस्थित हैं प्रोफेसर प्रदोष मिश्रा जी, आपका मैं स्वागत करती हूँ। विभाग में संकाय में हमारे बीच प्रोफेसर मंजुला चतुर्वेदी मैम उपस्थित हैं। अब आप सोचो मैम रिटायर्ड हैं महात्मा गांधी विद्यापीठ से, लेकिन जब उन्होंने ब्रोशर देखा तो उन्होंने कहा मैं आना चाहती हूँ। तो हमने कहा हाँ क्या है बिना हम लोग अधूरे हैं, जरूर आइए मैम। इस उम्र में यह उत्साह है कि वो सब विद्वानों को सुनने के लिए आए, तो आप लोगों में तो ये उत्साह जरूर होना चाहिए, इसीलिए ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मैं बहुत स्वागत करती हूँ सुरेश के नायर सर का, शांति स्वरूप सर का। आप लोगों का सहयोग मुझे हमेशा मिला है और आगे भी मिलता रहेगा मुझे उम्मीद है।
वाद्य विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर प्रवीण सर, स्वागत आपका। हमारे पूर्व सरकारी प्रमुख प्रोफेसर राजेश शाह सर, उनके पैर में तकलीफ है फिर भी सर आप आए, बहुत धन्यवाद। हमारे सभी संगठनकर्ता बंधु, डॉक्टर विजय कपूर जी, रत्नेश जी, आदित्य देव और हमारे विभाग के दोनों गुणी शिक्षिकाएं, डॉक्टर रंजना उपाध्याय, डॉक्टर खिलेश्वरी पटेल, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। और सबसे ज्यादा स्वागत करती हूँ मेरे प्रिय विद्यार्थियों का कि आप सब जोश में थे आज अपनी क्लासेस पूरी करके और समय से आप आ गए, बहुत आभार। मुझे पूरी उम्मीद है कि 7 दिनों में हम लोग जरूर कुछ ना कुछ ऐसी चीजों को जानेंगे, समझेंगे जो हमें आगे और नए काम करने के लिए प्रेरित करेगा। इन शब्दों के साथ सभी का पुनः स्वागत एवं आभार। Good afternoon. Dean Faculty of Performing Arts, Professor Shashikumar ji, Head of Class Department, Dr. Vidhi Nair, other faculty members from Performing Arts, Visual Arts, and my personal acquaintance, Professor Vidhi ji. It's indeed a pleasure to be a part of this conference. And it certainly brings a lot of pleasure as well as nervousness as I stand before you. Because when it was, when I was told that I have to speak on something with regard to a multidisciplinary aspect, it also takes a lot of investment in terms of learning, combining, as well as presenting. As a matter of fact, I prepared my lecture in English and I apologize for that. But it will not be difficult. We will दोनों आंसर बोलने के लिए मैं कोशिश करूंगा. And why I did it is I come from Mishra and it's not a native language. So I didn't want to go wrong on issues which can put me in the face. So first of all, before I enter into my presentation, I must thank Dr. Vidhi Nagar to have conceptualized such a wonderful event, a project, which not only brings people from several disciplines together to speak about what we are going to listen in all these 7 coming days. But the most beautiful thing that happened in Banaras University, and I think for the first time that I'm standing before an original painting to speak about the artist straight in front of you. So this happens very seldom that you find that we are speaking in the gallery in front of the artwork to the audience, speaking about the art, and where the artist is present in front of you. So that doubles the nervousness. Having said that, this effort is certainly going to motivate a lot of the people to see the real confluence between different disciplines as they come over and merge, mingle, and express themselves in their own tones, voices, images, and images. So when we are sort of present here to understand what this conference is all about, I think this gives me a privilege to be the first speaker to stand before this painting to speak about the artist. But as you know, we cannot enter into an artist's life right away. Like we cannot enter into the bedroom of every person without entering the main gate. So in order to put that in a sequence, I have created 2 sections in my presentation and a small conclusion. So the first segment, in fact, takes you through the logic through which an artist thinks, and then I think that applies to both visual performing and literary arts. At the same time, I'll be touching upon through my presentation visual arts, which happens to be one of the forte. And I thought that coming from performing arts background,
you might be having a lot of knowledge about the tradition, and you'll be also listening about the tradition of aesthetics uh, and execution practices, shastras. So I thought I'd introduce you to something that we call modern in arts, post-modern engagements, and how they take shape, where we live today, how we address the now. So that's how this whole concept of preparing the lecture is based on. And if you come across any questions, do raise your hand because it is not about just one way speaking, but I would love to have questions if there is any so that we can have a discussion. So why I gave this title emerging images from meditative voice? Because the images, do you think that they just fall from the sky or they're like coming out of nowhere? Or they have got a serious lineage of rooting into several disciplines and that which comes to us through our experiences of people, places, and time. So it is always contextual to a period. We cannot remove it and put it in some other period and say that this is what we are looking at. So from that context, the images essentially emerge from something. Could be an idea, could be a thought, or could be something that the artist refers to, and we'll be coming slowly into that. But what I'm trying to take you towards is the meditative voice, where there are things which comes to you in an intuitive manner. You don't essentially control them, and they come as naturally to you. Now, when we move from here, I quote from one of the very important artists of the 20th century, John Berger, who says that drawing plays with appearance. It oscillates between seeing, thinking, remembering, and imagining, controlling and being controlled as the image emerges. It is continuously and simultaneously shifting itself in the course of its making. तो जो द्वंद्व हम लोगों के मन में आती है या जो स्वर जो इमेज हमारे मन में आता है वो ऐसे नहीं आता, वो कई सारे कॉन्फ्लिक्ट्स के बीच में से होके आता है, कई सारे द्वंद्व के बीच में से होके आता है। तो ये जो एक वैचारिक मन के धरातल पर हम जाके उन रूपों को एकत्रित करके उसको अपने भावनात्मक रूप से हम प्रस्तुत करते हैं, तब शायद वो एक हमारे किसी एक एक्सप्रेसिव फॉर्म का स्वरूप वो लेता है. So we need to understand how these images are coming from that segment. So in the first part, I'll be talking about the principles of intuition. It's not a long lecture, so you can have a peaceful hearing. And I'll be taking you across images. So I'll start with a very basic, what is intuition by the Random House Dictionary, and it says, immediate apprehension or cognition without reasoning or inferring. हम किसी का कारण बिना पूछे, बिना उसमें से कोई इन्फरेंस निकाले हुए अगर हम उसकी पहचान को स्वीकार कर सकते हैं तो वो अंतर्ज्ञान की तरफ हमें ले जाता है. और this is basically the premise on which we all stand and position ourselves in order to understand and the works of art. The importance of intuitive inquiry lies in the ability to effectively convey the depth and complexity of the creative process of the artist. It serves to uncover the dimensions of what means to be human, such as profound, transforming, mystical and creative. जितने प्रकार के लोग हम उसको अनकवर करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके विचारों को अनकवर करने की कोशिश कर रहे हैं.
which is sometimes available through traditional investigation। कई बार होता है हम शास्त्रों के माध्यम से उसको अप्रोच करते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं, और कई बार हम शास्त्रों के बगैर उनको समझने की कोशिश करते हैं। So analytic definitions of art are classified into two types, descriptive and normative। ये सबको पता है, ये कोई बहुत पुरानी बात है, ऐसी कोई अचंभित करने वाली बात नहीं। So what we come to now is the first definition that we are trying to understand between creativity and intuition, and this is based on the deluge and theory of nomadology. So creativity is the ability to generate innovative ideas and manifest them from thought into reality. The process involves original thinking and production. अच्छा, यहाँ पे ये सोचिए, if it is not innovative, if it is not original, then what would it be? There will be something, obviously. कोई ऐसा वस्तु जिसको हम कलात्मक रूप में बताते हैं वो मौलिक ना हो और फिर वो इनोवेटिव ना हो, रचनात्मक ना हो, तो क्या हम उसको कला कह सकते हैं? कह सकते हैं, लेकिन वो एक दूसरे वर्ग का है जिसको हम लोग शब्द के रूप में जानते हैं, जिसका रिपीटेटिव फॉर्म होता है, जिसमें मेथड्स होते हैं जो अपने स्वरूप को बहुत परिवर्तित नहीं करता। While as intuition, as they say, is an ability to follow and respond to the ebb and flow of materials and ideas to effect a change or divert the course of a material that is in flux। अब ये क्या है? ये आपको उन्मुक्त कर देता है। ये आपके सामने कोई नियम नहीं रखता है कि आप इसी को फॉलो करेंगे तो ऐसे होगा, अगर आपको गाना गाना है तो आप इस तरह से कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे नहीं कर सकते हैं। आप आलाप कर सकते हैं, राग कर सकते हैं, चीजें लगा के स्कल्पचर कर सकते हैं, रंग लेके पेंट कर सकते हैं। कुछ ऐसे बात इन सारे प्रक्रियाओं में होती है जो अनायास हमको उसको करने के लिए प्रेरित करती है, जिसका कोई कारण नहीं है। दैट इज व्हाट वी कॉल इंट्यूशन। हमें लगता है ऐसा होना चाहिए, जैसे हमारे सामने कुछ नियम हैं, लेकिन अगर सारे लोग एक ही नियम फॉलो करते हैं तो क्या आपके भी जो ट्रेडिशनल परफॉर्मेंस हैं वो इस नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकता था? तो उसमें हर वक्त कोई ना कोई नया इंटरवेंशन किया है, नए उद्भावनाएं की हैं, नए राग आलाप स्वर उसके साथ जोड़े हैं, ध्वनि को जोड़े हैं, तब जाके हम कुछ नया बिंब उसमें से बनाए। तो इसका अर्थ ये हुआ कि इंट्यूशन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। मल्टीपल की ओर आते हैं, inducing an aesthetic experience bearing embodied meaning, inducing awe, serving as key elements in ceremonies, faithfully representing a certain reality, drawing attention to a social or ecological problem, stimulating thought about art, criticizing its futility, and apparently violating the rules quietly employed by the artist genre in order to revive its language। The list is endless। तो इतने सारे लोग, मैंने जितना बताया आपको कि सो मेनी टाइप्स ऑफ वेराइटीज यू कैन हैव, और सबसे चुनौतीपूर्ण तो तब होता है जब ये समकालीन परिस्थितियां समाज और व्यवस्था के ऊपर टिप्पणी करता है और उसको समाज के सामने ले आता है। तो हो सकता है हम लोगों को बहुत उसमें अच्छा ना लगता हो, लेकिन ऐसा होता है। ठीक है, जैसे गैजेट लेके हम लोग चलते हैं, अध्यापक हमारे क्लास लेते हैं तो हम गैजेट के साथ व्यस्त रहते हैं, तो अध्यापक को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन उससे हम गैजेट नहीं छोड़ते हैं। बहुत साधारण सा उदाहरण, हम गैजेट के साथ लिपके रहते हैं और कितना भी उसके ऊपर शिकायत हो, वी डोंट रियली केयर। सो एग्जैक्टली इन द सेम फैशन आर्ट में बहुत प्रकार के परिवर्तन होते हैं, और इन परिवर्तनों को जरूरी नहीं है कि हम समझें या उसके आस्वादन हम लोग कर पाए, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि उसकी कोई अपनी अस्मिता नहीं है। So the modern observer, the last point in this, is also playing a very significant part। On one hand, it is rarely attuned to those subtle vibrations। In the realm of art, he seeks simple imitation of nature for a practical purpose। बहुत सिंपल थी कि उनको ये लगता है कि एक पोर्ट्रेट हो या कोई ऑर्डिनरी पेंटिंग हो, सीनरी हो, ये बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये सर्वग्राह्य है, उसमें कोई सवाल नहीं करना। ये हम देखते हैं, गुलाब का फूल है, पक्षी है, चिड़िया है, बादल है, पहाड़ है, जल है, नदी है, समुंदर है, ये हम देखते हैं, तो वो उसको इमिटेट करके दे देता है, हम खुश हो जाते हैं।
तो क्या इतना ही कला है। लेकिन यहाँ पे एक दूसरी बात भी आ रहा है, द इमिटेशन अधेरिंग टू सर्टेन कन्वेंशंस, जो सामयिक होता है, तात्कालिक होता है, which we call contemporary, that responds to the contemporary situation, right? And finally, expressions of an inner feeling that German translated as sentiment, concealing the true essence in natural form. तो देखिए अब कहाँ से हम लोग आ रहे हैं, ये जितनी बातें मैंने बताई ये दृश्य पर था, लेकिन अब जर्मन्स ने 1905 ऑनवर्ड्स, 1910 ऑनवर्ड्स कुछ ऐसे मूवमेंट्स ले आए जिससे ये बताए कि हमारे अंदर जो रिस्पॉन्स होता है, हम किसी व्यक्ति, व्यवस्था या वस्तु को देख के हमारे अंदर जो प्रतिक्रियाएं होती है, हम उनको कैसे कलात्मक रूप से प्रस्तुत करते हैं. सो दैट इज वेयर व्हेन all the art forms, when truly artistic, fulfill their purpose and become food for the spirit. So now this visual object is becoming slowly spiritual because the sense of emotion, expression, which are connecting to their works of art. It is particularly so when the observer becomes conscious of a responsive vibration within his soul. So he's not looking at it as a skillful person. देखिए बहुत मैं कहता हूँ, इसको मैंने कई बार कहा भी होगा कि कुमार स्वामी बहुत अच्छा बताते हैं कि एक कला में कई प्रकार के लोग बहुत कुछ ढूंढते हैं. एक जो बहुत अच्छा कारीगर होता है वो उसमें कुशलता खोजता है, ठीक है. एक धार्मिक व्यक्ति उसमें धर्म खोजता है, ठीक. एक जो अध्यापक है उसमें गुण खोजता है. इसी तरह से जो सामान्य व्यक्ति होता है वो सिर्फ रंगों से ही प्रभावित होकर आकर्षित होता है उसकी तरफ, विजुअल आर्ट के संदर्भ में. जैसे हम लोग हैं, मैं बहुत सारे नुआंसेस परफॉर्मिंग आर्ट्स का हो सकता है नहीं जानता हूँ, लेकिन मुझे क्लासिकल गाने सुनना अच्छा लगता है, और आपको ये हो सकता है कि उसकी ध्वनि मुझे आनंदित करता है. So we don't know exactly how we are attracted towards this, but there is certainly a formula of attraction, which essentially does not require a skill or pre-existing knowledge in order to appreciate that. We need to understand this. So the observer becomes a very significant person in order to complete the process of communication, जिसको हम लोग संप्रेषण कहते हैं या जिसको सहजानुभूति में हम लोग कन्वर्ट करते हैं. So these are the process through which we look at them. वस्तुएं हैं, उनके अर्थ को बदल के क्या कलात्मक स्वरूप में उसको कन्वर्ट किया जा सकता है, 100 साल पहले की बात हम कर रहे हैं. तो उस समय ये एक रेडिकल थिंकिंग जरूर था, और एक तरह से ये डेडाइज्म के अंडर है, जो लोग वैसे ही उस समय के कला को रिजेक्ट कर रहे थे. तो ऑब्वियसली जो कला को रिजेक्ट करने के लिए उन्होंने नया सोचा, और कला का मतलब वो केवल विजुअल आर्ट को नहीं कर रहे थे, इवन पोइट्री कर रहे थे. अगर आप डेडाइज्म के कॉन्सेप्ट में जाके देखेंगे, इट स्टार्टेड फ्रॉम स्विट्जरलैंड बाय रिजेक्टिंग द लिटरेरी रिव्यूज और द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ राइटिंग लिटरेचर. उसको उन्होंने रिजेक्ट किया बिकॉज इट वाज हैविंग एन हेजीमनी ऑफ द इलीट एंड दे वांटेड टू चैलेंज इट. सो दैट एसेंशियली चेंज्ड. एंड ये जो काम है, इस तरह के काम कई प्रक्रियाओं के बाद आया है. और कभी अगर, जैसे आप लोग तो विदेश घूमने जाएंगे ही, अगर कभी आपको मौका मिले तो म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क में जरूर जाइए. वहां पे ये वर्क है, और इसके साथ दुशा के और वर्क्स भी हैं. इसकी खूबी यही है कि इसको एक ऑब्जेक्ट से आर्ट बनाने की जो पूरी प्रक्रिया है, कॉन्सेप्चुअल, वो एक जर्नल में नोटेड है, एक एक प्रक्रिया उसका, कि इसको कैसे एक ऑब्जेक्ट से कॉन्सेप्ट में ट्रांसफर किया जा रहा है. और इसी तरह से साइकिल व्हील को भी उन्होंने बनाया है. इसी तरह से तमाम ऑब्जेक्ट्स को लेकर उन्होंने काम किया है, जो फाउंड ऑब्जेक्ट्स हैं, जो उन्होंने तैयार नहीं किया, पाया और एज अ आर्टिस्ट बनाया. Because we know that Duchamp presented his ready-made in an artistic contest in which, among other things, acknowledged artistic values were becoming more and more diverse. We can only infer that he intended to mock the seriousness of artistic production, metaphorically call into question the function of art, or break down the border between art and non-art. तो ये एक कोशिश प्रयास युक्त था.
So we do not attribute this kind of a sense to the prehistoric hunter in any intention that would lead to the access having functions similar to those of the Dushan's ready-made. So this is another example which brings us here. इसके बाद we are looking at the constructing a relation with images, people, and ecosystem. And the philosophers like I have listed, and what they say, the true function of art is expression, says Collingwood. Bell says that it is a significant form. Bursley says it is the inducement of aesthetic experience, and Danto says it is embodiment of meaning. तो ये चार अलग अलग प्रक्रियाएं हमको अलग अलग समय पर बता रहे हैं और ये चार कोई भी गलत नहीं है, लेकिन उस समय के लिए ये महत्वपूर्ण था। तो जो उस समय के कलाएं बनाई जा रही थी वो इसी के आधार पर बनाई जा रही थी या उन्हीं के आधार पर ये थियरीज को कंस्ट्रक्ट किया गया था। और इसमें दो एग्जाम्पल्स हम यहाँ लेंगे जो ये एक बहुत महत्वपूर्ण कलाकार हुए थे मॉडर्न आर्ट के, जिनका नाम था पॉल सीजान, और इन्होंने ये एक खूबसूरत बास्केट ऑफ एप्पल्स बनाया। अब आपको ये बास्केट ऑफ एप्पल्स में कोई सब कुछ सामान्य दिख रहा होगा अगर आप लोग सामान्य एक दर्शक हैं, लेकिन जो कला के विद्यार्थी हैं, जो कला इतिहास पढ़ते हैं, उनके लिए एक सामान्य बात नहीं है। अगर और इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं दे रहा हूँ। टेबल के नीचे रखे गए कोने के हिस्से को देखिए और दाहिने तरफ जो सामने की तरफ है उसके दाहिने तरफ एक लाइन में नहीं है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसके ऊपर रखे ये जितने भी फल रखे हुए हैं उनके ऊपर पड़ता हुआ रोशनी एक स्रोत से नहीं आ रहा है, अनेक स्रोतों से आ रहा है। और साथ ही साथ जो ऑब्जेक्ट्स रखे गए हैं उन ऑब्जेक्ट्स को कई डायमेंशन से बनाया, किसी को ऊपर से बनाया गया, किसी को सामने से बनाया गया, किसी को पार्श्व से बनाया गया, तो कई सारे व्यू पॉइंट को इसमें मिलाया गया है। तो वो क्या कर रहे थे? वो सिर्फ इतना खोज कर रहे थे कि हम एक वस्तु के हर पार्श्व को कैसे एक साथ दिखा सकते हैं। और एक बहुत नायाब प्रयास था, ये करीब करीब 1895 के हैं। और आप देखिए कि जैसे मैंने कहा कि उस समय के जो तकनीक है, जो कुशलता है, उसको ये चुनौती दे रहे हैं। जिस समय हम लोगों के पास इंप्रेशनिज्म आ चुका है और रियलिज्म जा चुका है, तो तमाम ये सारे काम हो रहे हैं, उस समय ये इसको चुनौती दे रहे हैं। और इसके साथ उन्होंने कॉग्निजिबिलिटी को, उसके पहचान को नहीं छोड़ा। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। So, is it important to explore the historical information regarding this? I'll take you to another painting. जो एक सेंस ऑफ डिकंस्ट्रक्शन है जिसमें हम उनकी कई चीजों को हटा लेते हैं, ये वहां पे आ रहा है। तो ये क्या खोज रहे हैं? ये एक सेंस को खोज रहे हैं, एक इमोशन को खोज रहे हैं, एक जो हम लोग कहते हैं मादकता खोज रहे हैं। ठीक है कि ये बिल्कुल जिसको कहते हैं केयर फ्री होके अपना नाच रहे हैं। दे आर नॉट वरीड अबाउट देयर whether they are holding each other's hand, whether they will fall down, whether they will die. They're above that. So that kind of an ecstasy which they're creating is very important. So there actually you don't need to know who are these people. It's very important to know how ecstatic this whole composition is. So this is where this whole business of understanding how we look at these images, how we need to understand these images. Do we really know about should we know about the background of these works? उसके हिस्ट्री को जानना चाहिए, नहीं जानना चाहिए, या हमें पता हो तभी हमें उसको देखना चाहिए, उसके अप्रिसिएशन करना चाहिए? तो ऐसी बात नहीं है। हमारे पास तमाम इसके सूचनाएं हैं और अक्सर ये कहा जाता है कि अगर थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में जानकारी रख लें तो संभवतः हम इसको अप्रिसिएट करने में हमें काफी मदद मिल जाएगी। सो व्हाट दे आर शोइंग हियर इज इट्स अ ग्रेट डील ऑफ inner vitality which is actually emphasized here. It's not about the identity. So after that we're going to the second section, and here I'll be coming into how these objectives will be applying to Suresh, right?
So being trained in art, and I'm quoting in bold, writes and making of inquiry, sharpening powers of observation and being encouraged to think through observation rather than after it. Like hunters, we have to learn to follow the movements of beings and things, and in turn to respond to them with judgment and precision. जब आप आपने इस चीज को महसूस किया होगा, जब हम कोई काम करते हैं, कुछ चीजें अनायास हो जाती हैं। जैसे हमारे हाथ सोचने लगता है, जैसे हमारे पैर सोचने लगता है, जैसे हमारे दिमाग सुन हो जाता है, जैसे दिल काम करने लगता है। क्या हम इन लोगों से ये सब उम्मीद रखते थे? ये जो हमारे ऑर्गन्स हैं, क्या हम ये उम्मीद रखते हैं कान अपने आप काम कर रहा है? लेकिन कर तो रहा है। कब कर रहा है? जब हम मोबाइल देखते हैं और मम्मी बुलाती है, हमको पता है कि मम्मी बुला रही है, तो कान काम कर रहा है। हम कान कुछ और कर रहे हैं। ठीक है, तो ये यही कह रहा है कि एक होता है कंसंट्रेशन, अटेंशन, एक होता है जो हम लोग कहते हैं कि थिंकिंग व्हाइल ऑब्जर्विंग दैट, राइट? सो देयर इज अ थिंकिंग वे। हम कैसे साइमल्टेनियस थिंकिंग करते हैं। बाय गॉड्स ग्रेस एवरी ह्यूमन इज ब्लेस्ड विद दैट। वो मल्टीपल वर्क कर सकता है, और ये मल्टीपल वर्क करने के लिए उसको बता रहा है दैट वो बाद में नहीं सोचता। जैसे मैंने कहा हाथ काम कर रहा है, आप वेट करते हो कि जब मस्तिष्क कहेगा तब जाके आपको किसी को मारना है। अगर आपके दिमाग सनक गया है तो आपको मारना है। उस समय हाथ काम करता है, दिमाग काम नहीं करता। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट, एंड इट इज नॉट अबाउट पॉलिटिकल थिंग। आई एम टॉकिंग अबाउट द प्री हिस्टोरिक किलिंग ऑफ द एनिमल्स, राइट, हु वर द बीस्ट्स, जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते थे। तो उनके लिए हम सोचें कि हम इनको मारें, छोड़ दें, या हमें बचा ले, नहीं, उसको मारना है तो हाथ मारता है। So the mind never thinks after कि मुझे मारना है कि नहीं. So that's how it is simultaneously happening. That what Ingold says. Drawing is the first visible form, Joseph Boyce says. In my works, the first visible thing of the form of the thought, the changing point from the invisible powers to the visible things. अब देखिए, वहां पे कुछ नहीं है कागज पर। आप जाइए, जब सुरेश नायर बैठते हैं, जब म्यूजिक चलता है, तो कागज पे कुछ नहीं होता है। लेकिन जब म्यूजिक चलता है और म्यूजिक का प्रोग्राम खत्म होता है, 2 कॉपियां खत्म हो चुकी होती हैं। तो ये कहां से आए? दे वर नॉट देयर। दैट व्हाट एक्चुअली जोसेफ बॉयस सेज, दैट दे वर नॉट देयर, बट दे वर वेरी मच देयर. व्हाट ही डिड वाज रिकॉग्नाइजिंग देयर पाथ ऑफ मूवमेंट एंड अंडरलाइनिंग इट, ट्रेसिंग देम। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट्स है, इन कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत जरूरी है. So into the second section, where we'll be talking about these 3 things. The first, I'll be talking about his role and his spiritual role and traditional training. तो ये कमोबेश सब लोग जानते हैं कि सुरेश नायर गुरुवायूर में पढ़े हैं, गुरुवायूर के बाद शांति निकेतन में पढ़े, फिर एक फेलोशिप में टेम्पल यूनिवर्सिटी गए, फिर वहां से आने के बाद BHU में पहुंचे. जितना सीधा मैंने बताया, ये जर्नी कभी भी इतना सीधा किसी भी कलाकार के लिए नहीं हो सकता, क्योंकि कलाकार इसमें 4 ज्योग्राफिकल लोकेशन को टच कर रहा है जो उसका अपना नहीं है. और कलाकार एक निष्क्रिय व्यक्ति नहीं है, मस्तिष्कहीन नहीं है, इसलिए वो हर प्रकार के सिचुएशन को रिस्पॉन्ड करेगा. तो पहले गुरुवायूर में जो उन्होंने किया वो एक तालीम थी. उनको लगा कि उनका उसमें इंटरेस्ट था, तो उनको किसी भी कलाकार के, वो चाहे नृत्य का हो या वाद्य का हो, दृश्य का हो, लेखन का हो, वो साइमल्टेनियसली ये सारे काम कर रहा है. इसीलिए मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड दिखाया. ये जो साइमल्टेनिटी है, ये साइमल्टेनिटी आपको कई सारे विधाओं के साथ समरूप में परिचित कराता है, एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट. So when we are looking at this person going from one place to the other, from a very traditional small place, मैं अभी सौभाग्य से 6 महीने पहले उनके स्कूल भी होके आया हूँ. बहुत छोटी सी जगह है गुरुवायूर मंदिर के प्रांगण में, और वहां पे काम करने की बहुत सहूलियत नहीं है, लेकिन वहां पे शिक्षा का जो एक इंटेंसिटी है, जो तीव्रता है, वो बहुत है. वहां पे आप
काम करते हैं तो केवल काम ही करते हैं और कोई चीज नहीं करते, और वो सारे काम जिस भी प्रकार से, एंड दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग प्लेस। और भारत में मुझे लगता है ऐसे बहुत कम जगह हैं जहां पे ट्रेडिशनल आर्ट को इस इंटेंसिटी के साथ कंटिन्यूटी में पढ़ाया जा रहा है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, और ये जो कंटिन्यूटी है कहीं ना कहीं उनके मन में इसकी धारणा जरूर बनी होगी। फिर वो शांति निकेतन जाते हैं और एक और गुरु के साथ काम करते हैं, के जी सुब्रमण्यम। वो भी केरला से हैं। शायद ये कारण रहा हो कि उनको उनके साथ काम करने का मौका मिला और उनके लिए सहूलियत रही। वहां जाने के बाद वो एक ऐसे संस्थान में जाते हैं, मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताऊंगा। शांति निकेतन एक जगह नहीं है। यहाँ भी हमारे पास शांति निकेतन के विजुअल आर्ट के कुछ स्टूडेंट्स हैं, मैं देख पा रहा हूँ। शांति निकेतन एक जगह नहीं है। शांति निकेतन एक पाठ्यक्रम नहीं देता। शांति निकेतन जीवन को परिवर्तित कर देता है विचारों से। पहला ऐसा संस्थान रहा जिसने वैचारिक धरातल पर परिवर्तन को लिया, और वहां से बाद में बड़ौदा बना विजुअल आर्ट में, और ये सारे जो प्रक्रियाएं शुरू हुई। लेकिन शांति निकेतन में जो वैचारिक धरातल पर काम करने की जो एक प्रवृत्ति है वो बहुत महत्वपूर्ण रहा, और उससे इनको क्या मिला, ये मीडियम से फ्री हो गए। अब इनको ये लगा कि मुझे केवल दीवार पर चित्र बनाना जरूरी नहीं है, मैं सीमेंट पे भी कर सकता हूँ, मैं टेराकोटा में भी कर सकता हूँ, मैं कागज पे भी कर सकता हूँ। तो कोई भी बंधन उनको वहां पे उस माध्यम को लेके नहीं रहा, और ये कभी रहा भी नहीं। अगर आप देखें तो सारे कलाकार सारे प्रकार के कला करते थे 1930 में, 1940 में। तो वहां की एक जो माहौल है, जो एक पर्यावरण है, कलात्मक पर्यावरण है, वो पूरी तरह से एक विकल्प आपके सामने खोल देता है, जहां आप अपने मन से, अपने रुचि के हिसाब से संरचनात्मक काम कर सकते हैं। और यह जब आपको मिलता है तो आप अगर छोटे जगह से आए हैं तो आपके दिमाग बिजली की रफ्तार से दौड़ती है। आप और क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, आप इसमें और क्या ढूंढ के निकाल सकते हैं, क्योंकि ये सुविधाएं आपको वहां पे नहीं थी। ये जो एक विशाल कैनवस है आपके सामने नहीं था। तो उन्होंने यहाँ काम करना शुरू किया और कई सारे गैर पारंपरिक माध्यम में काम करना चालू किया, और उससे इनकी जो रचनात्मकता है उसमें और वृद्धि होने लगी। मैं बताऊंगा आगे आगे जब हम लोग काम के बारे में जिक्र करेंगे। उसके बाद वो फुलब्राइट पे टेम्पल यूनिवर्सिटी जाते हैं। टेम्पल यूनिवर्सिटी में उनका जो काम है वो बिल्कुल शांति निकेतन से तो लिया गया है, लेकिन उसमें भी एक उन्मुक्तता और है। लेकिन उसके साथ वो कर क्या रहे हैं, अमेरिका जैसे एक बहुत ही प्रगतिशील एक जिसको हम लोग डेवलप्ड कंट्री कहते हैं, है ना, वहां पे कलात्मकता की जो अनंत संभावनाएं हैं उसमें जाके पहुंच गए। अब वहां पे लोग, वहां के कलाएं, उनकी धाराएं, उसकी विभिन्नता, उसकी जो सूक्ष्मताएं हैं उसको सीखते हुए वो वापस आते हैं, और उसके बाद बीएचयू ज्वाइन करते हैं। बीएचयू में, बनारस में खास करके कला की एक अलग अपनी पहचान है। और यहाँ आने के बाद वो ये जो 3 जगह से कलाकृतियों का ये जो कला सर्जना वो करते रहे हैं उसको एक तरह से वो समेटना चाहते हैं, क्योंकि यह टेम्पल नहीं है, यह शांति निकेतन नहीं है, ये बनारस है। और यहाँ पर आके उनकी कला में स्पिरिचुअलिटी का प्रवेश करता है। ऐसा नहीं कि इससे पहले नहीं था, इससे पहले भी रहा है, लेकिन यहाँ आने के बाद उसमें तीव्रता आती है, इंटेंसिटी आती है। ही ट्राइज टू रिलेट हिमसेल्फ टू द एनवायरमेंट ऑफ बनारस थ्रू व्हिच ही वांटेड टू अंडरस्टैंड द सिटी एंड पीपल, places, events, projects, and he became extremely active. Perhaps ऐसा हो सकता है कि जो उनकी विचार है, जहां पे वो इस स्पिरिचुअलिटी को वो समझ रहे हैं, उसको एग्जीक्यूट करने का समय आ गया। और उसके साथ ये जो पूर्व के उनके अनुभव थे वो उसको एक धरातल प्रदान कर दिया, एक बेसिस दे दिया, जहां पे वो अपने काम को एक आकार दे सके। तो यहाँ आने के बाद वो अपने काम को एक नया तरीका देते हैं। सो आफ्टर अराइविंग इन वाराणसी, he submitted to the sense of spirituality, and the words, poetry, letters, essays, and the ramblings flowed into special a spiral notebook. यहाँ पर अगर देखेंगे उनके जितने भी स्पाइरल बुक्स हैं जहाँ वो स्केचिंग करते हैं उसमें बहुत सारे चीजें हैं, केवल ड्राइंग नहीं है। So he was lost in the ephemeral world of
now and nowhere, and started to search for the end or a new beginning. Searching for an end or a beginning. So it's kind of a metaphoric representation. Where are these words that never spoken out, but the experiences are enormous? यहाँ पे क्या होता है कि शब्द बहुत नहीं होते, यहाँ पे अनुभव बहुत होता है। आपसे कोई कहेगा 80 घाट कैसे होता है, आप बताएंगे कितने सीढ़ियां गिनती करके नीचे उतरना होता है। आप ये बताएं कि वहां पे शाम को आरती होती है, या आप बताएंगे कि खुद जा गुरु सुन लो देख लो जाके वहां। दैट इज व्हाट द डिफरेंस इज, you know, that he was trying to experience, intake, and as much possible. His inner world finds its expression through intuitive creative process. Theories of intuitive thought and insight are complex and the definition remains imprecise, yet they are considered central to the phenomenon of creativity and the search for meaning. So here his paintings seem to lose track of time and fall into a kind of meditative state, where his thoughts and feelings seem to float by without conscious awareness. His works define content, tireless and sometimes blissful, and I quote, massive concentration that creates exhibits, what many other creative people describe as the trance-like stage, unquote. तो वो क्या कर रहे हैं, वो उसके साथ एक समानांतर रूप से जुड़ जाते हैं। जो मैंने आपको बताया कि हाथ काम करता है, हाथ सोचने लगता है, तो यहाँ पे यही हो रहा है। बिकॉज इन स्टेज ऑफ ट्रांस you are not controlling yourself, but you are controlled. And you don't know the state where you can control it back. So this state of intuition is a synthesis of the basic concept, empathy, unconscious, and symbolism. And this was theorized by Carl Jung in 1964. So this is a sensory or gut feeling based on bodily sensation. So wherever he was going in Banaras, he was having some experience, and he was accumulating those experiences to, give back in his paintings. So some of these properties of intuition described by Bastek are the pre-verbal, pre-conscious, non-sequential. Pre-verbal, शब्द बनने से पहले, pre-conscious, चेतना से पहले, and non-sequential, किसी के बाद नहीं। ठीक है, कालयुग यही कहते हैं कि ऐसी एक स्थिति आती है जहां पे आप कि कोई चीज घटने से पहले उसका आभास आपको हो जाता है और वो एक स्वरूप ले लेता है। कोई चीज किसी क्रम में ना हो और उसकी अपनी एक क्रम बन जाए। तो ये जो आप देख रहे हैं ये इन्हीं का प्रतिफल है। ठीक है, so he has been aware about the similarities between the act of painting and the calm focused qualities of the mind that occur in meditation. The elements of meditation in his painting practice tend to minimize the impulse of forming attachment to both ideas and thoughts and enable him to focus on the creative process itself. वो अपना करते चले गए, फल क्या निकलेगा पता नहीं। इसने बुलाया निरल करना है कर दिया, उसने बुलाया ड्राइंग करना है कर दिया, उसने कहा तुम्हारा काम बहुत अच्छा है एक मेरे लिए कर दोगे कर दिया, सोचा नहीं क्या होगा। लेकिन ये जो निरंतरता है सर्जना की, वो उनको एक नई जगह पे ले आया और एक स्थापित कर दिया कि हाँ यह व्यक्ति इस तरह से काम कर सकता है। तो ये जो निरंतरता है, ये निरंतरता कला में बहुत आवश्यक है और इसी की बात हो रही है। सो दिस एक्ट ऑफ नॉन अटैचमेंट as a way of achieving a deep insight and profound knowledge of the nature of self and the meaning of life very much coincides with the works of the Buddhist scholars. देखिए, अब आप उनसे पूछेंगे तो आपको बुद्धिज्म की बहुत कहानी बताएंगे कि कहाँ कहाँ जाके काम करके आए। ठीक है, तो ये जो आइडिया ऑफ थॉट है, it is penetrating through experience to his mind, and he's just following what the impulses say, what the intuitions say. He's not trying to question them, he's not trying to obstruct it, he's not challenging it. Rather, he follows that way of impulse through which he is reaching this place. So right now, the second is that he's walking into the hall of mirrors. The process of analyzing
one's own creativity has been similar to walking into a hall of mirrors. जैसे अभी क्या है, अभी वो इसके अंदर अगर पूरा उनका एग्जीबिशन लगा होता है, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरे सामने उनकी पेंटिंग दिख रही है क्योंकि यहाँ मिरर लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ मिरर लगा हुआ है इसलिए मैं देख पा रहा हूँ, लेकिन आप ऐसे सोचिए कि अगर ये पेंटिंग समूचे जगह पर लग गया होता तो उनको खुद लगता है कि वो किसको देख रहे हैं, वो हर जगह तो वही है, right? I'm not comparing that with omnipresence, but it is like as if you are standing between your own creations. You are trying to rediscover yourself, whether to appreciate, not to appreciate, or to just keep silent and experience that feeling. So when we're looking at these words, we're sort of trying to understand the reflex of experience. So the drawing reflects the painting process, and then reflection becomes the reflection, and he is affected by the insight that occurs in the process. This insider's view is immensely useful in trying to understand how artists create. अब ये देखिए कितना मजेदार, जब आप लोग प्रैक्टिस करते होंगे अकेले तो उस समय आप इनसाइडर होते हैं, आप अपने गलतियां खुद देखते हैं, अपनी खूबियां खुद देखते हैं, उसी के हिसाब से जो आवश्यक परिवर्तन है आप उसके साथ करते रहे, निरंतर प्रक्रिया है, यहाँ भी वही हो रहा है। तो वो एक मेजर ले रहे हैं जहां पे ही इज लुकिंग एट द वर्क्स एज एन आउटसाइडर, क्रिएटिंग देम एज एन इनसाइडर. So when he is encountering this process of looking at the images in a hall, it is mirroring himself, right? So this mirroring of the self becomes important because it becomes a critique. वो आपसे कहता है ये काम ठीक नहीं है, ये काम को ऐसे बदला जा सकता है, इसमें ये और संभावनाएं बन सकती हैं. So when you are looking at the images, you are certainly looking at a kind of experience. One scholar, Graham Sullivan, says he asserts that the apprehension of a new knowledge is arrived by giving focus, sustained attention to the mind, its confusion, its patterns, and its belief system. Some of Suresh's thoughts are repetitive, persistent, and some are negative, disturbing, and others are happy and playful. So I'm just trying to compare these theories and his work simultaneously. So when we're looking at these images, we're not just seeing them, we're seeing the kind of response the artist creates over a period of time. So the stream of consciousness is a term, right? Yeah. So the stream of consciousness is a term that describes literally genre that represents the uncensored, and continuous flow of ideas, feeling that constitute an individual's unconscious experience. इसमें क्या हो रहा है, इसमें कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ आइडियाज है, जब आप करते रहते हैं तब भी आइडियाज इसमें आते रहते हैं और फीलिंग्स भी आते रहते हैं और आप उसको तात्कालिक रूप से डॉक्यूमेंट भी करते जा रहे हैं, उसको रिफ्लेक्ट करते जा रहे हैं. So that is what we call the stream of consciousness. Where a stream of consciousness moves, we simultaneously, move with that. So similar to the consciousness of a pre-verbal child, the flow of consciousness is not censored rationally, controlled, or logically ordered, but parallels actual mental experience. तो ये जो मैंने इंटेलेक्चुअल रिस्पॉन्स की बात करी, मैं उसी को डिफाइन कर रहा हूं यहाँ पे, जो सेकंड पॉइंट है. तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे कि वो एक ऐसे सिचुएशन में आ जाते हैं जहां पे तीनों प्रक्रियाएं, सोचना, विचार करना और करना, तीनों एक साथ एक संगम में बन जाते हैं, एक कॉन्फ्लुएंस में आ जाते हैं. सो हिज वर्क्स आर अनवेवरिंगली ऑटोबायोग्राफिकल. ये सब लोग जानते हैं कि ही डज व्हाट ही विशेस, सो इट इज ऑटोबायोग्राफिकल. यू कैन वेरी वेल से कि कब क्या हुआ और किसके बाद क्या हुआ, इवन टू दिस सीरीज ऑल्सो. And the focus of his study is on the personal introspection that occurs in his creative practice, as well as autobiographical content of the work and social experience, told through such devices as the hundreds or 108 garners, the thousand gestures, traditional shadow puppets of Kerala, yogic postures, and his day-to-day experience and observations. तो कितनी जगह उनको ट्रैवल करना पड़ता है मेंटली, यहाँ वहाँ केरला,
कई प्रकार के जो कार्य है उसकी तरफ, so forth and so on. So his process is deliberate attempt to circumvent the rational, limited and judgmental aspect of the mind. उसको पूरा छोड़ देते हैं, जजमेंटल नहीं होते हैं कि इसको करने से लोग क्या सोचेंगे, कोई क्या कहेगा, कोई क्या नहीं कहेगा. So he is not getting into that kind of a debate. Whatever people say, किशोर कुमार की तरह लोग तो कुछ कहेंगे, है ना, लोगों का काम है कहना. So he moves on with that kind of a sense. So that is what actually मैं इसको ये डिफाइन कर रहा हूँ कि वो केयरफ्री एक शब्द में मैं कह सकता था, मैं ये नहीं कह रहा. मैं आपको थ्योरेटिकली बता रहा हूं कि वो कितना निर्लिप्त है इन सब चीजों से जो उनके इर्द गिर्द घटित हो रहा है, और उनके संलिप्तता सिर्फ उनके कृति, कार्य, संरचनात्मकता और सोच विचार के साथ रहती है. ये समझने की बात है. और ये जो विचार है वो हमें प्रेरित करना चाहिए कि हाउ ही इज रीचिंग दिस प्लेसेस वन आफ्टर द अदर. देन So coming to one of the very important works that he has created, और मैं यहाँ से थोड़ा सा आगे आपको ले जाऊंगा and we'll come up to this. So the Butterfly Museum and Making of Thousand Gestures, ये 1000 gestures है जो आपके पास है, ये 1000 से बहुत ज्यादा है, हमने 1000 करके रखा हुआ है, ठीक है. लेकिन ये जो it starts with a Butterfly Museum and that's enormous. This is a huge painting. कितना फीट है सुरेश सर? What is the dimension of this? 50. Yeah. So it's a huge painting. And now what is important, you can see that they're all butterflies. And ये इतने छोटे में तो दिखेगा नहीं, मेरे पास इसके क्लोजअप्स नहीं है, लेकिन इस पेंटिंग में जितने बटरफ्लाइज हैं, इंटरेस्टिंगली कोई भी रिपीटेशन नहीं है. नॉट अ सिंगल इमेज इज रिपीटेड एंड दैट देयरफॉर वी कॉल इट एन आर्ट. अगर इसमें रिपीटेशन हो जाता तो हम उसको हो सकता है क्राफ्ट के कैटेगरी में रख देते, है ना. लेकिन यहाँ पे एक भी बटरफ्लाई दूसरे के साथ मैच नहीं करता. एंड लुक एट देयर आईज, दे आर ऑल डिफरेंट. दे आर ड्रॉन फ्रॉम द ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ केरला and the kind of motifs which are running around are also very different from each other. So besides the mural painting that Suresh specializes in practices, one finds a huge body of miniature formats in various ways that appear in repetitive manner. And and as one witnesses the Butterfly Museum, the sense of repetitive forms at first glance bedazzles the view. जैसे आप देखते हैं तो एक यहाँ सब एक जैसा है. However, on a closer note, one can view a greater variety of forms and expressions drawn from nature in form of eyes, pupils, patterns that are different from each other, that include the creative collection of non-digital records. The performative function of the artist in this scenario, as well as whether the documentation drawing may be classified in a variable media art, makes for a fascinating promise. तो ये जो काम होता है ये एक जगह बैठ के तो नहीं करेंगे ना. You would be doing a lot of things simultaneously, right? So these are a product where he has to come back to the sense of trance, go again, come back and again go out. So that kind of a connectivity with the object, with the artwork, is very significant. This elementary effect comes to the deep reaching emotion that is due to the spiritual development. Here the psychic power of the color takes hold, causing an emotional vibration. Thus, the first physical elementary force develops the channel through which the deep inner emotion reaches to the soul. It is thus evident that the color harmony can rest only on the principle of corresponding vibration of the human soul. This basis can be considered as the principle of innermost necessity. तो ये क्या होता है ना, अब धीरे धीरे अपने अंदर प्रवेश करने की बात है. जो प्रक्रिया है वो अपने अंदर प्रवेश करने की है, बाहर की तरफ नहीं है. बाहर की तरफ तो जो ये बन जाएगा ये लोगों की तरफ आ जाएगा, राइट. So the artist is moving inside himself, into himself, to the inner self, in order to create some object which can be appreciated or can be seen by the people outside. So it is not an easy task. It is a metaphysical business. So it is given an immaterial abstraction of those ideas and the weight of art history. So here is not trying to explain किस युग में तितलियां बनाई गई थी, किस कलाकार ने बनाया, उसमें क्या क्या खूबियां थी और क्या कमियां थी, ये उसके बारे में जिक्र नहीं करते हैं.
और ये जो बर्डन ऑफ आर्ट हिस्ट्री उसको अलग हटा दिए है। उन्होंने अब एक ऐसे काम करना शुरू किया है जहां पे वो एक नए परिचय का निर्माण कर रहे हैं, creating a new identity through his own art, right? So when we are looking at this particular work, and we are moving now into the second segment of the musical drawings, because that is the second phase after this which comes in. And that, in fact, brings in Suresh Nair to the central platform where people start knowing him and knowing his art, because he was now trying to work in the public space, right? So while we are going into the next works, and these are the musical drawings that you have. So in case of the musical drawings, both hard and soft versions, because he has a soft version also. Chotsani Dean, one of his scholar, explains that it is in the fluidity, movement, and energy of his lines, and that Suresh desires the viewer sees not only the line, but hear the sound and feel the emotion that was part of what made these lines. Now, what is beautiful in this is, if I just take you back by a couple of slides, you can see that it is kind of a flowing line from a subconscious level, what we call trance, what we call the emotion, deep emotion. But from somewhere within, all those previous practices are sort of peeping out. वो धीरे से ना, जैसे कहते हैं कि मुंह उठा के दिखा दे रहे हैं कि मैं चेहरा हूं, और इस प्रकार के चेहरे आपको केरला में मिलते हैं। मैं उस तरह की आंख हूं, मैं उस तरह के क्रीपर्स हूं, या डिजाइन हूं, मोटिव हूं। तो ये कहीं ना कहीं उस चीज को हमारे सामने ले आते हैं। बट अगेन you can see this is a form, a face of an elephant. So the subconscious is also being directed by some previous experiences. So it is not like just doing something and leaving it there. और ये काम उन्होंने कई हजार किए हैं। It's like a whole body of work, is huge. So it's kind of a work where you can see several kinds of motifs which automatically appeared, and then it all moved with the sound waves with everyday life. He's taking both the silence of meditative practice and musical sound and offering the world with his interpretation of power and mystery of sound and silence. The drawings depict repetitive pattern in linear and primarily parallel strokes in a flow of movement that reflects the musical beat and notes as if choreographing a symphony. So he's choreographing the lines, not the dance, not the music. Somebody else is doing that. So what he's doing is just following that pattern of choreography, right? So he's giving the right direction to these lines who appear by themselves. मैंने आपसे पहले ही बताया था कि ये अपने आप चलने वाली रेखाएं हैं, इनको चलाया नहीं जाता. So when you look at that, the percussive beats of the musical piece are matched with the emphatic strokes of ornamentation at intervals. The fluidity allows space and form to arise seemingly at random, although an intrinsic order materializes discretely. तो ये जो स्पेस है, जो स्पेस को वो कवर करते हैं अपने वर्क्स में, उन कृतियों को जब आप देखते हैं तब पता लगता है ये उन्हीं चित्रों के गोल्ड प्लेटेड प्रिंट्स हैं. तो जब हम देखते हैं तो ये हमें कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी की ओर प्रेरित करता है. So his paintings did not only the diversity of religious experience throughout India, but also a distinct synthesis of regional icons, symbols, and customs. Suresh's pattern and forms are inspired by the melodious and energetic rhythms and beats of Indian musical instruments and vocalists. When painting during a concert, he often looks to be in trance, a synesthetic experience of channelizing the visual aesthetic of the sound into felt lines and forms. जैसे महसूस होता है वैसे रेखाएं बनती हैं, और जैसे महसूस होता है वैसे आकार बनता है. While individual images from this series could be examined in depth and quite differently by each viewer,
It is the process as a whole and the impact of the entire output that best exemplifies the spirit, ambition, and the presence of this remarkable body of work that has complex functions as discussed in the segment of functions of art. So everybody who's looking at these images is not going to read the same story, right? So all the stories of the perceivers, all the stories of the viewers and the readers will be different, and it will be different from person to person. So now I'm at the fag end of my presentation and almost like I'm done. The power of images and their transformation in interdisciplinary ecosystem. We have already talked indirectly about an interdisciplinary ecosystem in which his works are actually coming out. So these works are a result of this person or this event or this project, COVID virus, right? So what they have done, he was going to Lisbon, trying to change a flight and had nothing to do, was wanting to do some sketch, didn't get a notebook. So instantly he comes up with a visiting card. He thought that he would do something and was trying to draw a woman walking away from him, right? That is the first instance where he started doing this moving figures. And instantly, without any precursor, without any intention of doing a particular female, but it is about a female in general. Then he suddenly found that the female has lost its gender, is neutralized, right? So he started creating neutralized figures. They are removed from their, occupation of gender. वो नारी नहीं है, पुरुष नहीं है, कुछ नहीं है, बस हैं जो हमने कुछ हद तक मातिस के पेंटिंग में देखी थी कि वो हैं, एक क्रिया चल रहा है एंड पीपल आर बिजी विद दैट एंड दे आर एंजॉयिंग व्हाट दे डू, राइट? तो एग्जैक्टली यहाँ पे यही हो रहा है एंड स्लोली उन्होंने इसको एक तरीका बना दिया काम करने का. एंड देन आई वाज ट्रैवलिंग विद हिम टू कोची एंड ही वाज कैरिंग अ बंच फुल ऑफ विजिटिंग कार्ड्स, प्लेन विजिटिंग कार्ड्स. यहाँ से जाते हुए ढो के ले गए, फिर वहां से आते हुए ढो के ले आए. सो ऑल द टाइम ही वाज डूइंग दैट. ऑफ द रिकॉर्ड he gifted some of the cards to the air hostesses and they were very happy. किसी ने कुछ आर्ट तो दिया. जिंदगी जो जितनी रफ्तार से भरी होती है उनकी, जहां सुकून का एक पल नहीं मिलता, वहां एक कला का पीस मिल जाए तो एक मेंटल पीस मिल जाती है वहां पे. तो ये जो एक विचार है, नॉट टू बिलोंग टू एनीबॉडी, नॉट टू बी सम वंस फॉर्म, that kind of neutralization plays a very significant role. And that is how he developed this whole series of the gestures. And the gestures were very important. He did a small project of portraits also with masks during the COVID, but I'm not taking that here for the discussion. So this visual notes that can lift them to the lofty world of melodious waves of lines and forms, which he has been familiar with since childhood through the Kerala Kathakali theatre and various forms of music. This recent new series of miniature figurative paintings by Suresh has quickly gathered into a huge tapestry of images, right? Although they resemble the massive scale of his canvases when put together, they also have a sense of intimacy when viewed individually. They would relate to anybody. आप इसको कुछ देर देखोगे, आपको लगेगा ऐसे बच्चा मैंने कहीं देखा है, इस तरह से कोई कूदता हुआ मैंने देखा है. You start relating. You read it in your own language, in your own experience, and you try to challenge those experiences onto yourself as to where did I encounter this man doing this, right? तो ये जो एक है, ये एक इंडिविजुअलिटी को पैदा करता है जहां पे परसेप्शन इंपॉर्टेंट होता है. They are rendered in ink with primary color highlights and structure grounded by the variations of gloomy to brilliant black and blue. तो ये जो आप देख रहे हैं ये अंतिम पर्याय की है. पहला पर्याय केवल काले स्याही से ही बना था, फिर नीले में आया जो आपने देखा, और फिर उसमें रंग धीरे धीरे घुसने लगे, कभी आकृति में तो कभी बैकग्राउंड में. और अगर आप ध्यान से देखें तो कई सारे ऐसे कार्ड्स होंगे जो सिर्फ
रंग हैं, उसमें आकार नहीं है। ठीक है, तो वो एक मोनोटोनी को भी ब्रेक करता है, मतलब ही इज कॉन्सेप्चुअली आल्सो वर्किंग एंड साइमल्टेनियसली वर्किंग ऑन द कंपोजिशंस. So this relationship between music, body movement, flexion, and visual form is a part of India's historic aesthetic inclination. It is not that this is happening for the first time. They became musical characters in Suresh's work. The body postures in innovative patterns, structurally organized in visual language, remain the kernels of the text, a number depicted in the sculptures in numerous temples in India. He produces comparable visual forms that are representative of his academic interest while practicing physical movement accompanied by music. The little squares and rectangles contain linear and undulated forms with an apparent feeling of music, filled by postures that emerge as records of objectified markers of expression. देखिए उनको बना दिया ना उन्होंने, इसमें कई आकृतियां आई चली गई, कई सारे चरित्र आए और चले गए, और सब लोग यहाँ पे एक तरह से लिपिबद्ध हो गए. They are documented here, right? So the relationship between the music, body movement, flexion, and visual form is a part of the historic tradition, and they become musical characters here. And these are happening through a process of jap, mantra, which is repetitive in itself. So he's not getting bored. जैसे हम लोग जाप करते हैं उठ के ना, count the rosaries. Similarly, he's making the paintings. Go on making the paintings. 1, 2, 3, 4, 100, 105, 108, 200, 300, 500, 1,000, and so forth and so on. So this musically charged mantras is constantly repetitive, and when spoken, it takes on a musically charged universe that can lead to ecstasy in expression. इसको बनाने के बाद की आनंद तो यही है कि इसी गैलरी में लगने के बाद ये दृश्य कला वो परफॉर्मिंग आर्ट्स में आके फिर से लग गया. ये तो उसकी खूबी है, क्योंकि एक जगह स्थिर नहीं रहता. हो सकता है कई सारे आकृतियां इस बीच में अपने हाथ पे तोड़ चुके हों, लेकिन ये शांत नहीं रहता. इट गोज फ्रॉम अ प्लेस टू अनदर and thereby becomes one with the artist. As in the instance of concept of thousand gestures, the metaphysical ideogram encoding proliferation is imagined here as a frame, multiplication as a visual of the metaphysical form. तो ये जो मैंने आपसे कहा कि इनसे अपने परिचय को हटा लेना अपने आप के उसको स्पिरिचुअल कर देता है कि नहीं? I'm not talking about the gods or goddesses or, but I'm talking about the spiritual connection that one has with the art making. So harmonious tones of resonance, a reflected universe of lines and forms, can be a creative world of meditation rather than actuality. In such setting, music and art raised from naive to conceptual with a contemplative mood that tradition accents. Nature, which is essentially enigmatic, can be depicted through sound, or rather improvisational music, as well as physical movement and the static pictures. तो प्रकृति के विभिन्न प्रकार के जो स्वरूप है, ये यहाँ पे उन स्वरूपों में से एक को स्वीकार किया है. So this structured forms are two-dimensional musical silhouettes that are stylized and abstract. The animated silhouettes of Kerala shadow puppetry have left a great effect on his sense of theatrical performances and art. A flow of energy with kinetic waves of visual illusion, of repetitive configuration with the stray spots of squares attribute to a complex geometric pattern of music. मैं आपको पहले फिर ले जा रहा हूँ बटरफ्लाइज में, और फिर वापस ला रहा हूँ थाउजेंड जेस्चर्स में. And you can see there is a very clear, distinct pathway of progression. And this pathway of progression is not essentially is relating to the person, but the idea of the person which gets matured over a period of time and is expressing itself in various forms. And that is what Vijay Kumar Menon says, that they are flesh body motions, right? Accompanied by music that execute abstract positions in various light tones without any rehearsal. ये जितने भी यहाँ पे आपको अलग अलग जेस्चर में मिल रहे हैं, इन्होंने कोई रिहर्स नहीं किया है, और ना कोई आर्टिस्ट ने रिहर्स किया है इनको बनाने का.
So they are all automated forms, simultaneously, spontaneously coming up by themselves, appearing for the artist and letting him know that we are here. You can just put a color here and there and put a line and we'll be appearing for you. So it's a kind of a reverse process. So it's a dramatic abstraction in terms of movement, music, line, light, and color. This accidental occurrence of his resourceful response have propelled this remarkable series of visiting cards in drawings. And for this, Catherine Meyer says that arranged in a panoramic grid, the first apprehended from a distance, they resemble an ancient tile wall. इसको अगर दूर से आप देखेंगे जैसे लगेगा कि टाइल लगा हुआ है कहीं पे, मोजाइक्स लगे हुए हैं उस तरह से, right? But individually, they vary from those that are quite minimal to other and delightful and inspired range of detail. इसमें बहुत सारे details हैं जो आप चाहें तो देख सकते हैं. They might be plain or fancy, snag in the box of a page, or attempting to reach outward. Some seem somber while others are exuberant, perhaps reflecting Suresh's own moods and time of creation. So, how the other people are also trying to view these works. So, when we are looking at this, I'm going back to one of the expressions of Guggenheim Museum's catalog of 1960s. So it says that in this application of form, the music achieves result that they are beyond the realm of painting. On the other hand, painting outdistances music in many ways. For instance, music has at its disposal a duration of time. Okay? जो म्यूजिक है वो कुछ समय के लिए चलता है, उसके पास कुछ समय है. While the painting does not possess this advantage, but presents it to the spectator in its entire message in one single instance. जो आपके सामने है वो एक स्नैपशॉट टाइप का है. Thank you, Performing Art Department, to arrange this kind of session. And I have a question that you mentioned that whenever artist doing something, he just doing the thing, and when it's appeared to the public place, the public or the viewers interpret the artwork according to his knowledge or according to his experience. So when I entered this room, I found this painting has no title and no concept. So this was a very whenever we go to any galleries or any kind of exhibition halls, we see artwork with concept and with title. So this is the first time where I see the artwork has no kind of concept and title. So we can interpret the artwork according to us. But do you think it is very important to having no kind of concept with the artwork? So the first part of your question, I think, addresses it, that it doesn't need a title to be, binding the viewer with that. The second question is that, is it essential? Is that your question? Yeah. Nothing is essential in this world. It is a choice for the artist to give a title and sort of encompass his viewer within an idea of thought and try and explain what he has done. But then the problem begins when I say something that you have to look at this in this particular way and understand what I want you to understand. Then perhaps I'm also obstructing your understanding of the object in a neutral value. So nothing is essential. That's the reason why you will find that plenty of number of artists put their works as untitled. So that is the only reason, because they want to open up a debate through their work of art. So the very difference of opinion while looking at the work of art could initiate a debate which can take you to another realm where you can sort of rediscover yourself or ideate your thought
Because nowadays, giving concept has become a pattern for the galleries. Okay. Because they're doing it for certain purpose. They're not doing it for the art's sake. So that particular purpose will be defeated if they don't give that title to the work of art or do not give a concept note. But tell me one thing, and I'm not talking about Suresh Nair now. We have hundreds and hundreds of temples where the artists are not known. Do we not appreciate their works? We go to the caves of Ajanta. We don't know many names, but yet we appreciate their work. Let us forget about that. Suppose we have not met an artist and we'll never meet him, but we have seen his work and we don't know the concept. Will we not appreciate it? Like I said in the beginning, I don't know, I'm not trained theoretically to understand music, vocal, percussion, or whatever. But I enjoy that sound, that dhwani, what you say, right? So for that, you don't have to qualify. For that, somebody doesn't have to say that this is this raga and you now enjoy. So there's a sense of circumambulation and there's a sense of liberty. So there is no fixed nomenclature for having a particular thing there and not there. It's a choice, I think, which the artist has to exercise. I don't know if I have satisfied you. Yeah, thank you. Thanks. So we've described various theories on functions of God, like Bollywood, and so even in our Indian histories, we have a concept called universalization or Sadharanikaran. Is this the juncture where the Western aesthetics and the Indian aesthetics meet? Do you think so? Or are these theories similar to other Sadharanikaran? Is universalization is what they propound also? Well, both the theories have their own space and existence. So I will not essentially say that those theories will adhere to the theories of Sadharanikaran because we have our Shastra and where we talk about the rasas and, Rasnispatti, Sadharanikaran and, all those communication and so forth. So every art, above all the philosophical theories, is meant to be delivered, meant to be relished, meant to be impactful. It doesn't need a philosopher. That's why in the beginning I said that two philosophers said that अगर हम ये कह देते हैं आपको मानना होगा, अगर आप नहीं मानते हैं तो दर्शक की गलती है. ऐसा नहीं हो सकता. You cannot put a barrier before somebody saying whatever I say is the final word. No. There could be different ways and means of understanding whatever we want to understand. See, let's put it this way, जो सब लोगों को समझ में आ जाएगा. एक एडवर्टीजमेंट आया था बहुत सालों पहले. उसमें एक बुजुर्ग दंपति हैं, करीब 80 इयर्स ओल्ड अराउंड, वही शो किया था. तो जन्मदिन है वाइफ की और हस्बैंड एक अंगूठी लेके उनके लिए आए और उन्होंने आके बड़े प्यार से उनको दिया कि मैं आपके लिए कुछ लाया हूं. तो वो खुश होके उन्होंने कहा कि क्या लाए हो. तो जैसे खोल के देखा तो देखा कि हीरे की अंगूठी थी. तो उसके बाद का सवाल बड़ा मजेदार है और उसका जवाब बड़ा मजेदार है. तो उनकी पत्नी पूछती हैं, इस उम्र में हीरे का क्या करेंगे. तो पति जवाब देते हैं, हीरे को क्या पता है कि तुम्हारी उम्र क्या है. That is the neutrality of the feeling. So it sort of crosses all the barriers of thought. So these are theories based on which we try and relate our idea of understanding. But it's not essential that they have to complement our theories or we have to complement their theories, or both have to be on the same page in order to explain us as to how we are going to understand a work of art, whether it is music, vocal, dance, or visual, or literary. So there couldn't be any theory as an end point to understand that. So, I mean, that's how we look at it. So the ultimate goal of every art is relation. Of course, Anand. Now I would, if you have any questions.